Hello friends, welcome to the channel Business Transformation and Tax Compliance. In a compliance world, this is Sajjan Singh. Your speaker is going to explore one of the important video, and this is towards goods and service tax. GSTR-9C. What is GSTR-9C? That is the reconciliation statement. To whom it is required to file, who is exempted, and what is the threshold limit. What would be the consequences if you are not filing the GSTR-9C? It is important that you should know as an entrepreneur, as a business owner, as a taxpayer. So GSTR-9C is applicable to all those entrepreneurs and the taxpayer or the business owner whose aggregate turnover in the previous financial year is more than 5 crore. So check in your business, if your turnover is more than 5 crore in the previous financial year, that is 2021 and 2022, you have to be compulsory file the GSTR-9C on or before 31st December of the following year, that is the 31st December 2022. चेक कीजिए, अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का धंधा है, टर्नओवर है आपके बिजनेस में, तो आपको GSTR-9C फाइल करना पड़ेगा, कंपल्सरी फाइल करना पड़ेगा, and it is going to help you to fulfill the compliance, yearly compliance. So the aggregate turnover, the 5 crore, the aggregate turnover is calculated on the basis of whatever the turnover you have in your financial, the permanent account number base, the turnover जो आपका कैलकुलेट होता है. तो आपका पैन नंबर के बेसिस पे आपको फाइनेंशियल्स बनते हैं, isn't it? Yes. जो आपका टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर है, then you have to be compulsory file the GSTR-9C and the time limit is on or before 31st December 2022, the financial year 2021 and 2022. Who is exempted? The GSTR-9C is exempted. The following supplier here is like input service distributor, casual taxable persons, non-resident taxable persons, person who is deducting and collecting tax. इन सबको GSTR-9C फाइल नहीं करनी है. GSTR-9C उन्हीं को फाइल करनी है जिन्होंने GSTR-9 फाइल किया हुआ है. So GSTR-9 का aggregate turnover limit is 2 करोड़. तो जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है GSTR-9 में, वो GSTR-9 फाइल करेगा. जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर, वो GSTR-9 फाइल करेगा. GSTR-9 से जिनका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर, उनको GSTR-9 फाइल करना पड़ेगा. इसका मतलब कि जिसके भी ऊपर 9C एप्लीकेबल है, उसका GSTR-9 ऑटोमेटिक एप्लीकेबल है. सो दैट यू हैव टू चेक इन योर बिजनेस. GSTR-9C, while you're going to file the GSTR-9C, make sure that you have compulsory file your GSTR-1, GSTR-3B and GSTR-9. अगर आपने GSTR-9, GSTR-3B and GSTR-1 continuously फाइल किया हुआ है as per the requirement of the law, तभी आपका GSTR-9C इनेबल होगा पोर्टल में. अदरवाइज यू नॉट एबल टू फाइल GSTR-9C. So that you have to take a note. So what is GSTR-9? So as name suggests here, the reconciliation statement, पूरी की पूरी reconciliations है, हर चीज की रिकंसिलेशन है. वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव पॉपुलेटेड इन GSTR-9, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद द रिकंसिलेशन एंड द रीजंस फॉर नॉन रिकंसिलेशन पार्ट आपको यहाँ पे देना है. मतलब GSTR-9 से आपको कुछ कहीं का नहीं छोड़ा है. सारे इंफॉर्मेशन आपको देने हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको देने हैं. चाहे आप आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करो, उसके ऊपर टैक्स पे करने की बात करो, इनवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करो, टैक्स के रेट जो आपने पे किया है, जो आपके ऊपर बनता था, उसकी बात करो. सबकी रिकंसिलेशन और सबका रीजंस फॉर नॉन रिकंसाइल पार्ट आपको GSTR-9C में देने हैं. सो हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, यू जस्ट लुक एट GSTR-9C, जहां पे आपके टोटल 5 पार्ट्स हैं एंड टोटल 16 टेबल्स है. 5 पार्ट 16 टेबल्स जो आपको GSTR-9C में फिलअप करना है. This is not the big deal that you are not able to file the GSTR-9C. The informations are very easy. What is important here is that you should know that how to file the GSTR-9C in an organized manner. It is important. What the information that you have is going to populate in GSTR-9C, and that information you must have a backup in GSTR-9. अगर आपने बैकअप बना रखा है GSTR-9 में, all this information that you would be able to easily file in GSTR-9C. मुद्दा ये नहीं कि आप कैसे फाइल करोगे, मुद्दा यह है कि आपके पास कितने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, कितने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है. एंड दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड द GSTR-9C इन अ वेरी इजी मैनर. सो इफ यू गो थ्रू द GSTR-9C टेबल 1, 2, 3A, 3B and 4, basic information that you have to fill up here.
योर एंटिटीज नेम, योर GSTR नंबर, योर ट्रेड नेम वगैरह वगैरह, ये आपको यहाँ पे भरने हैं. कमिंग टू टेबल नंबर 5, reconciliations of the annual turnover that what you have in your audited financial statement and what you have reported in your GSTR-9, इसकी पूरी reconciliation आपको देनी पड़ेगी. And what the turnover you have in your audited financial statement that you have prepared on accrual basis as per the fundamental accounting assumption, accrual concept you have, उसके बेसिस पर अपना फाइनेंशियल बनाया हुआ, उसके बेसिस पर आपका टर्नओवर है. While you come to GSTR-9, यहाँ पे accrual concept पे आपका GSTR-9 नहीं चलता है. तो जो GSTR-9 में रेवेन्यू है जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ है, जो आपने रेवेन्यू GSTR-9 में दिखाया हुआ है, राइट, इसके बीच का रिकंसिलेशन आपको देने पड़ेंगे टेबल नंबर 5 में. सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सम ऑफ द instances here, like you have the unbilled revenue at the end of the year for your financial, you have the unbilled revenue at the beginning of the year, right, that you have made the adjustment. Reimbursement revenue, some of the transaction that you have outed from the revenue, however you have paid the tax in your GST, right. Then you have the credit note, other adjustment, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. There are certain paragraphs that you have to be go through and fill the information accordingly in GSTR-9C table number 5. Table number 6, that whatever you have the unreconciled part of revenue, you have to give the reasons in table number 6. Then come to table number 7, the taxable turnover, उसकी reconciliation आपको देनी पड़ेगी. And what is the taxable turnover? So if you go through the total turnover that you have in your reconciliation statement, total turnover, with that you have to find out the taxable turnover. So if you go and exclude all those turnover or deduct from the total turnover, the turnover where the tax is not applicable, tax is exempted, like nil rated supply, exempted supply, zero rated supply, without payment of tax, supply to special economic zone, ये सारे सप्लाईज के जो टर्नओवर है वो आपको यहाँ पे डिडक्ट करने पड़ेंगे. और जब आप डिडक्ट करेंगे तो जो फिगर निकल करके आएगा, दैट फिगर वुड बी ए टैक्सेबल टर्नओवर. इफ देयर इज एनी रिकंसिलेशंस फॉर अनरिकंसाइल्ड पार्ट, जो आपने रिकंसाइल नहीं कर पाया, वो आपको टेबल नंबर 5, 6, 7 में आपको रिपोर्ट करने पड़ेंगे. सो द 5 में आपका 8 में रिपोर्ट करने पड़ेंगे. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू नो, राइट. एंड देन टेबल नंबर 9, 10 सिमिलरली आपके टैक्स के बारे में बात करता है, टैक्स के पूरी रिपोर्टिंग करने, रिकंसिलेशन करने. दिस इज इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ऑलरेडी इन GSTR-9. आपको वहाँ से कैटेगराइज करनी है एंड आपको फर्दर यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट करने हैं विद द रीजनिंग दैट इफ यू हैव एनी अनरिकंसाइल पाए तो उसके रीजंस क्या है, कारण क्या है कि वो आप रिकंसाइल नहीं कर पाए. दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल अप हियर, राइट. टेबल नंबर 12 इज टॉकिंग अबाउट द इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट. सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हाट यू हैव इन GSTR-3B वो पोर्टल के थ्रू, देन जो GSTR-9 में आपने लिया हुआ full informations of ITC input tax credit, what you have the B2B, what you have the input tax credit for unregistered person, from registered person, from input service distributor, revolves, सारे informations आपको टेबल नंबर 12 में आपको दिखाने पड़ेंगे. That is how it is important here. Accordingly, if you have any reasoning for unreconciled part, then again you have to give into the table number 13. So these are the information that you have to furnish in GSTR-9C. As name itself say, the reconciliation statement, सारे input, सारे outward, सारे inward, सारे tax liability that you have to be reconciled and give the correct and accurate information in GSTR-9C. It is important. So while you are furnishing these information, make sure you have a detailed calculations, detailed backup. And that backup you have in GSTR-9. Accordingly, you have to create the backup for GSTR-9C because ये annual return statement है, ये annual reconciliation statement है. तो इसमें अगर आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, आप आगे जाकर के इस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाते हैं कि हाउ यू हैव पुटेड द इन्फॉर्मेशन इन द पर्टिकुलर टेबल, इन द पर्टिकुलर लाइन, आप उसको समझ पाते हैं, आप उसको देख पाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाइल यू आर फर्निशिंग द GSTR-9 से ऑल दोज इन्फॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर टेबल, मेक श्योर दैट यू हैव ए डिटेल कैलकुलेशंस, मेक श्योर दैट यू हैव ए डिटेल एविडेंस that is going to help you. GSTR-9 if you have not filed, what would be the consequences? Panel provisions. So like how it is defined for the GSTR-9, right? The 100 rupees CGST and 100 rupees SGST per day for continuous default.
for continuous default, that you have to make sure that you are filing the GSTR-9 and GSTR-9C. It is important. It is self-certified statement. So for detailed panel provisions that I will discuss in detail in some other videos, it is important that you have to make sure that you are filing the GSTR-9C. While you are filing the GSTR-9, and if it is applicable the GSTR-9 से अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको GSTR-9 से फाइल करना है. You have to be self certified and upload that. That is more important here. फाइल करने के बाद you will find that some happiness you have because you have complied with the GST. मेरे दोस्त, this is very important, particularly for the SMEs. अगर आपने GST के compliances नहीं किए, आपका चाहे रेवेन्यू कितना भी हो, ग्रोथ कितना भी हो, स्टेबिलिटी कितना भी हो, फर्क नहीं पड़ता है. फर्क नहीं पड़ता है. आपका बिजनेस स्टेबल नहीं रह पाएगा. आपका बिजनेस स्टेबल नहीं रह पाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, start to find out the opportunity to fulfill the GST compliance, because at the end of the day, what is your objective? Your objective here is to have a more profitability in your business. Your objective here is to have a more growth in your business. And how the profitability and growth would become in your business if you are not going to fulfill the GST compliance? Think about it. It is going to help you to create the larger opportunities for your business. GSTR-9C, that is more important for your business. That is more important for your business because it is an annual statement. It is an annual reconciliation statement. Then you have to file. Compliances करो, अपने business को grow करो. Business grow करेगा with the compliances, you will have a more happiness. Business grow करेगा without compliances, you will have a more hurdle. क्या करोगे? असेसमेंट, नोटिस, कहाँ कहाँ जाओगे, कितने रिस्पॉन्ड करोगे, कितने लीगल हायर करोगे, कितने प्रोफेशनल हायर करोगे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट स्टार्ट टू वर्क विद द टेस्ट ऑफ द कंप्लायंस, विद द फ्लेवर ऑफ द कंप्लायंस, एंड दैट इज गोइंग टू ऐड द वैल्यूज इन योर बिजनेस. देन यू विल बिकम ए ग्रेट एंटरप्रेन्योर, द ग्रेट बिजनेस ओनर. जब आप कंप्लायंस के साथ में करते हो, यू विल बी मोर प्राउडली कि आप टैक्स पे करते हो, टैक्स से कंप्लायंस करते हो. एंड द जीएसटी ऑब्जेक्टिव, यही तो है जीएसटी का ऑब्जेक्टिव कि आप कंप्लायंसेस करो. आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप अपने बिजनेस को और बिजनेस के लाइसेंस के बेसिस पर अपने बिजनेस को बढ़ाओ. जितना धंधा बढ़ाओ उतना कंप्लायंसेस करो. यही तो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है. एंड द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू हैव अ वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स, वेयर यू हैव टू बी कंपल्सरी कंप्लाइड with all those relevant provisions, with all those relevant compliances. And once you are doing that, you'll be able to make more happy to yourself because you are fulfilling the compliance. Your business have no more problem. Business अपने खड़ा किया, कस्टमर का बेस बनाया, सप्लायर के साथ कनेक्टिविटी करी, एक ओवरऑल बिजनेस बनी, टीम बना, and suddenly you find that because of non-compliance of GST, आपका बिजनेस डिग्रो में जा रहा है. There are a lot of notices and assessment you are started to find. What would be happen in that case? Just imagine within yourself, because you are working as an entrepreneur, as a business owner. Particularly for SME sectors, आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. अगर आपको बड़ी मछली बननी है, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है, बड़े लोगों के साथ में बैठना है, बड़े लोगों के साथ में बिजनेस करना, then you have to think, my dear friend, ladies and gentlemen, particularly for SMEs. Start to focus on your small and medium entrepreneurship journey. इसको फोकस करो. SME से ग्रो करके बड़े प्लेटफॉर्म पे आओ, बड़े मछली बनो. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट द लार्जर अपॉर्चुनिटी. इट इज इंपॉर्टेंट because it is a responsibility to convey and explore the objective of goods and service tax. It is our responsibility to explore and say about the goods and service tax, how it is going to help you. And if you are not fulfilling the compliance, how you are going to degrow your business. That is more important. So ladies and gentlemen, start to fulfilling the compliances in goods and service tax and make more happy to yourself, make more happy to your business, make more happy to your teams, that is your families. And then you will be able to find out the larger opportunity, not only in terms of profitability, not only in terms of growth, but overall you have the scale in your business. You will have a more satisfaction in your business. Start to find out that, create the larger opportunity, get more growth,
and have a accelerate opportunities in your business over the period of time. This is Sajin Singh signing out. Until we meet again. Thank you. Thank you very much.